we are talking today who can make us happy. And again, I repeat the same. There is only one person who can ever make you happy, and that person is you, you, and you. एक चीज का फंडामेंटल आपके लेके जाइएगा, your happiness does not depend on anybody but yourself. Now, this gentleman I just now told you, he gave us the map of consciousness, and we have a rich Indian heritage कि जहां पर हर आदमी चेतना की बात करता है. ये क्या है कहानी? तो he scaled it. जो हमारा ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, इसको उन्होंने 0 से 1000 में स्केल किया. 0 इज डेथ. शेम इज जब आप अपने को छुपाए फिरते हो शर्म की फीलिंग से, दैट इज 20. एंड 50 क्या है? एपैथी. आपने बहुत लोगों को भीख मांगते देखा है. वो लोग हैं जो कि अपनी एक उंगली भी हिलाना पसंद नहीं करते. They have total apathy to themselves. ये वही सारे लोग हैं जो कि भीख मांगते हैं मंदिर के सामने कहीं पर एक कोने में, आपको घरों में देखे मिल जाएंगे, कोने में बैठे हुए. They don't want to do anything. This is 50. Fear is 100. हमें सबको मालूम है कि 90% of our fears never materialize in life. सुबह से शाम तक अपना वेस्ट कर देते हैं. Then anger is 150. All of us are angry all the time. And when are you angry? When you have some materialist thing with yourself. So आपके पास प्राइड के लिए कुछ चीजें होंगी. आपकी क्वालिफिकेशन होगी, आपका ओहदा होगा, आपकी बड़ी सैलरी होगी, आपके बहुत सारे नौकर्स होंगे, तभी आप एंगर दिखा पाएंगे. और अगर वो सारी चीजें नहीं तो आप चुपचाप डिप्रेशन के मरीजों के कोने में बैठोगे एपैथी की तरह से. So these are all negative emotions, and this negative emotion are going to take you down. ये आपकी पर्सनैलिटी को सुकुड़ देते हैं. You are here to give, give, give. But ये आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा कर देते हैं कि आप 5 पैसे किसी को देने के लिए राजी नहीं है. Then comes 200 mark. 200 mark is courage. Suddenly you shake up your shoulders and say, I want to do it. I can do it. जब वो नौकरी के लिए निकलता है तो वो बिल्कुल न्यूट्रल है. पता नहीं बॉस छोटा काम देंगे तो भी मुझे एक्सेप्टेड है, बड़ा काम देंगे तो भी मुझे एक्सेप्टेड है. आई विल शो माई क्रिएटिविटी नहीं छोटे और बड़े काम में करूंगी, बट आई एम न्यूट्रल. आई एम विलिंग टू डू दैट. द टोटल विलिंगनेस इज देयर, टोटल न्यूट्रलिटी इज देयर. उस टाइम मुझे ये है कि मेरा सर्वाइवल की जरूरत है, मेरे अपनी फैमिली का सर्वाइवल की जरूरत है. सो आदमी न्यूट्रल हो जाता है एंड टोटली विलिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ योरसेल्फ. भाड़ में जाए तुम्हारी डिग्रियां किनारे, हमारा खाने पेट भरना है, काम करो भैया, and that will be the end of the day. So this is willingness and acceptance. Acceptance is great thing. 350 का स्कोर है, करेज का खाली 200 था, and now willingness and acceptance का स्कोर है 350. And then विवेक जागेगा, जिसको बोलते हैं रीजनिंग. ये विवेक बहुत बढ़िया चीज है. विवेक इज गिवन द नंबर्स 400. ये आपको अपनी सुपर पावर से जोड़ता है. गॉडली जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है उससे जोड़ता है. आपको कायनात की चेतना से जोड़ता है. जब उसकी चेतना और आपकी चेतना एक हो जाएगी तो गॉडहुड हो जाएगा. सो मैंने आपको सिखाया करेज, न्यूट्रलिटी, विलिंगनेस. वो एक आदमी जो बाहर निकला है अपने बच्चों का पेट भरने के लिए और अपना पेट भरने के लिए, उसको वो ही इज न्यूट्रल. क्या काम मुझे मिलेगा? ही इज विलिंग. द पर्सन हैज टोटल एक्सेप्टेंस. एंड तब उसका विवेक जागता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ. तब उसको रियलाइज होता मेरे पुराने कर्म जो है मेरे सामने आ रहे, मेरे को कायनात लेसन सिखाना चाहती है. एंड धीरे 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 वो काम करता है तो उसका उस सब चीजों के लिए वो इतना मेहरबान हो जाता है कायनात के लिए कि ही हैज अफेक्शन फॉर एवरीबॉडी. उसका लव फ्लोज फॉर हिमसेल्फ, फॉर हरसेल्फ एंड फॉर एवरीबॉडी अराउंड. Then that is the time the person feels joy, peace of mind.
कुछ भी उसको मांगने के लिए नहीं उस टाइम. He is ready to give. At that particular time, his personality has an abundance feeling. And slowly he works on himself, and then he gets the enlightenment. Same thing is shown here. You can see the chart which goes from 0 to 1000 and less than 200. Less than 200, there's a lower frequency which called a negative frequency, and these are destructive to your personality. ये आपकी पर्सनैलिटी को सिकुड़ देता है. यू आर नॉट रेडी टू इवन शेयर वन एनपी विद एनीबॉडी. एंड once you have courage, once you have neutrality, once you have willingness to accept and work, once you have total acceptance, जो मालिक मुझको देगा मैं आई एम रेडी टू डू इट. और तब उसका विवेक जागेगा. एंड विवेक टेक्स यू एक्सपेंसिव. आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बढ़ जाती है, चढ़ाव हो जाता है. You have a feeling of abundance, and these are higher frequency which take you up, up and up. So this same thing. Now here is 0 to 1000, and on you can see that when you are in the lower energy, you are totally hopeless. You're totally despair. You have taken a total defeat. You've become lethargic. You don't want to raise one finger of yours, and you are a loser. This force is going down, but once you get onto courage, it becomes the power of yourself, of bettering yourself every day. You become happy, you become productive, you become cooperative, you become conscious, you become creative, and you are at ease with yourself and with everybody around. And once it touches 500, that's love. Love is the key. Love is the key. And that time, you're compassionate, you're fearless, and आपकी चेतना and पूरे ब्रह्मांड की चेतना बिल्कुल बराबर है. So this is what you can see. This is your contracted personality, and this is your expanded personality. Tao is a Chinese word. It is total joy, 500. Total joy. Above that, आपके और जो हम कहते हैं God, उसमें कोई फर्क नहीं है एक्शन में. You are part of the ultimate consciousness. So unless you start knowing where you are, you will not be able to work. आपको अपने विवेक से पता चल जाएगा कि यार कहाँ हम नीचे लोअर कर रहे हैं. मैडम ने ये बताया था कि ये हमें कहीं नहीं ले जाने वाली. ये हमारे को ऊपर अगर हमें जाना है तो हमें अपनी चेतना के ऊपर काम करना है और डे इन डे आउट इस पे काम करना है. So this is a very busy slide. I'm going to leave it with you, and you can definitely know at what is your view of life will change. What is the godly view about it, and what is the process. I think I can take a class of 1 hour just on consciousness. Now, again, इस चेतना से 2-3 रूल्स देती हूँ मैं. Now, मेरे को गुस्सा आया. So if my problem cannot be solved from the same level of consciousness. गुस्सा मैंने बताया था 150 पे. जिस लेवल पे आपकी कॉन्शियस ने गड़बड़ किया है, आपकी प्रॉब्लम क्रिएट की है, उस लेवल पे रह के आप सॉल्व नहीं कर सकते. अगर आपको सॉल्व करना है तो आपने अपनी चेतना का उससे ऊपर वाले लेवल पे ले जाना पड़ेगा, तभी आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकोगे. आई रिपीट अगेन, जिस चेतना और फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको प्रॉब्लम आई है, उससे ऊपर उठना पड़ेगा, और तभी आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकोगे. इसमें टाइम लगता है. ये एक दिन का काम नहीं है. चेतना को समझना टाइम लगेगा और उसके ऊपर काम करने के ऊपर भी बहुत टाइम लगेगा. सो दिस इज व्हाट इट इज. नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड इट. नाउ दिस इज आई जस्ट वांट टू से कि इस लेवल पे अगर हमारी ये प्रॉब्लम आई है तो हमें इसके ऊपर जाना पड़ेगा, तभी हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे. Secondly, the level of consciousness you are tuned on each morning will determine the quality of your experience throughout the day and towards the world. कहते हैं ना, बड़ी आसान भाषा में कहते हैं, if you've got up with a bad attitude or bad chetna in the morning, you can never have a positive day. But if you've got up with a positive attitude, you can never have a bad day. So that's it. Secondly, as you get on to higher level of consciousness, जो आपका रीजनिंग का है,
लव का है, लव इज अनकंडीशनल लव. ये नहीं कि यू आर माई हस्बैंड सो आई एम लविंग यू. It's not based on any condition. It is unconditional love. You get into spiritual approach to life. Once you level those higher consciousness, your frequency is attached there, then you get onto the spiritual approach to life. And चाबी यही है कि हमें रोज रोज अपनी हैप्पीनेस के ऊपर काम करना है. Pure Tao, just now I told you, once you get onto reasoning state, all this will get into flow, and it has got a superpower. It will take you up and up and up. So, coming to the last slide of mine, success is not the key of happiness. पहले ही बताया था, सक्सेसेस में और मटेरियल चीजों में आपकी हैप्पीनेस नहीं है. Happiness is the key to success. I repeat again, happiness is the key to success. And if you love what you're doing, उसका कर्क से एक बड़ी चीज है कि आपको कब वो हैप्पीनेस मिलेगी, when you love yourself and when you love what you're doing. You will be successful and successful. Love is the master key. Love is the master key that opens the gate to happiness. Love is the master key that opens the gate to happiness. So thank you very much. I've left you with a lot of material to dwell upon it, and you'll find there's no stop to it.